Hello, genius minds. How are you all? So, here I am, your learning buddy Aprajita with your Environmental Studies Class 4 by Acknowledge Series, Amit Publishing House. So, children, ready to start a new chapter with me? Okay. So, here we start chapter number 5 today, and the chapter is Plants Around Us. आप लोगों ने देखा होगा आपके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के plants and trees. Yes or no? Yes, it's there. Outside, when you go outside and when you look around, there are many types of plants and trees around us. So let's see what are they, and let's study something about the plants. तो चलिए स्टार्ट करें. हम plants के बारे में कुछ जानेंगे आज. We see all kinds of plants around us like trees, shrubs, herbs, etc. ये plants के ही तो types हैं. Trees, shrubs and herbs. They are the kinds of plants only. They are grown in the soil. ये जमीन में उगते हैं, soil में उगते हैं. Okay? Plants have many parts. Now look here. This is a plant. ये plant है और इसके अलग अलग parts होते हैं. Fine? The stem, flowers, leaves and fruits grow above the soil. Now children, look here very carefully. एक plant जो है वो soil में लगाया जाता है. उसका कुछ part soil, ये देखिए soil के, ये soil है. This is soil and इसके नीचे थोड़ा सा part है और बाकी का पार्ट ऊपर. तो जो पार्ट सॉइल से ऊपर होता है उसे क्या कहा जाता है? The part of the plant which grow above the soil is known as the shoot system. What is it known as? The shoot system. Okay, children? So this is the shoot system जो सॉइल के ऊपर होता है. The roots grow deep inside the soil. अब देखिए जो रूट्स हैं इसकी, ये सॉइल के नीचे चले जाते हैं. They look like long ropes spread out under the soil. ये कैसी लगती है कि सॉइल के नीचे किसी ने लंबी लंबी रस्सियां लगाई हैं. The roots form the root system. और ये जो है जो सॉइल के नीचे रहता है उसे कहते हैं root system. Fine? Root system and shoot system. Okay? Now, where are the plants grown? Some activity to do. Where are the plants grown? The plants are grown in the, where they grow in the soil. Do plants have many parts? Yes, plants have many parts. Okay. What grows deep inside the soil? Soil के नीचे deep तक क्या जाता है, क्या grow करता है? The roots grow deep inside the soil. Okay? Understood? आया समझ में अच्छे से? Next देखते हैं क्या है? Plants need water to grow and to make food through the process of photosynthesis. अब प्लांट्स को भी तो पानी चाहिए होता है ना, पानी और खाना चाहिए होता है. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, टू मेक फूड एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करता है और ग्रो करने के लिए उसको पानी की जरूरत है. Roots of a plant absorb water and minerals from the soil and send them up to the rest of the plants. अभी जो रूट्स है ना, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं? वो सॉइल में से, मिट्टी जमीन में से मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं, खींचते हैं और उसको प्लांट के बाकी पार्ट्स में भेजते हैं. दिस इज द वर्क ऑफ द रूट. रूट्स आल्सो होल्ड प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल. और रूट बिल्कुल अच्छे से प्लांट को पकड़ के रखते हैं जमीन में. There are two types of roots, taproot and fibrous roots. So, name the two roots. कौन कौन से roots होते हैं? Two types of roots are there.
One is taproot and the other one is fibrous root. F-I-B-R-O-U-T. Fibrous root. So now let's see about these two types of roots. Taproot. A taproot is a thick single root that grows down straight. अब जो टैपरूट होता है वो एक बहुत मोटा सा थिक सा रूट होता है, सिंगल रूट होता है, सिंगल, वो बिल्कुल डीप डाउन द सॉइल चला जाता है. इट डज नॉट हैव ब्रांच रूट्स. अब इस रूट की कोई ब्रांचेस नहीं होती. ये जो टैप रूट होता है ना, ये सिंगल ही होता है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं. स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ टैप रूट. एग्जाम्पल, कैरेट, पी एंड बीन प्लांट्स हैव अ टैप रूट. आपने देखा है कैरेट जो है, देखिए, इफ यू हैव सीन अ कैरेट और अ रेडिश, एक मूली या गाजर, जो भी आपने अगर देखा हो, तो यू मस्ट हैव सीन इट गोज डाउन लाइक दिस. Okay, somewhat like this, and ऊपर इसके क्या होती है, the leaves are there. Now यहाँ पे छोटी छोटी इनके ऐसे hair like structures होते हैं ना. So this in taproot जो है, taproot में ऐसा ही होता है. ये एक single root होता है बिल्कुल, और इसके बस hair like structures साइड से निकले रहते हैं, branches नहीं होते हैं, just hair like structures. Now we come to fibrous root. A fibrous root contains of many small roots which branch out from the base of the stem. Now, जो fibrous root होते हैं, इस बिल्कुल stem के जो base से निकलते हैं, वो बहुत सारे branches निकलते हैं. देखिए, ये तो tap root है single, ये है fibrous. यहाँ से बहुत सारे branches base of the stem से निकलते हैं. Grass, wheat and rice plants have fibrous roots. Okay, wheat plant, rice plant, इनके fibrous roots होते हैं. बहुत सारे roots एक साथ निकलते हैं. So this was about the taproot and the fibrous root. Now the importance of roots. Roots की क्या importance? Why roots are important? The roots hold the soil tightly and stop the tree from falling down. अगर रूट नहीं होगा, जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए, अगर एक प्लांट में रूट नहीं होगा तो ये सॉइल के ऊपर कैसे खड़ा होगा, तो गिर जाएगा. रूट्स हेल्प करती है एक ट्री को गिरने से बचाती है. ओके, उसको होल्ड करके रखती है. रूट्स हैव टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर. अब रूट्स के भी छोटे छोटे हेयर्स की तरह कुछ निकले हुए होते हैं, हेयर की तरह स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं. उनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर. दे आर नोन एज रूट हेयर. ओके, दे एब्सॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. अब ये क्या काम करता है? जो रूट हेयर होता है, ये मिनरल और वाटर सॉइल से एब्सॉर्ब करता है एंड सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. और बाकी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, उनमें उस वाटर को और मिनरल्स को सेंड करता है. Thus they help the plant to grow. और प्लांट को बड़ा होने के लिए यही तो चाहिए होता है, water and minerals. Heavy rain and a strong wind wash or blow away the topsoil. अब क्या होता है, जब बहुत heavy rain होती है या wind blow करती है बहुत तेज, तो soil का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर की लेयर होती है, वो wash away हो जाती है. This is called soil erosion. इसे कहते हैं soil erosion. Roots bind the soil and prevent soil erosion. अब देखिए, roots और क्या वर्क करती है? Roots इस soil को बिल्कुल जकड़ के रखती है, बांध के रखती है, जिससे कि soil erosion नहीं होता है. तेज जब बारिश होती है या हवा भी चलती है, तो वो soil ऊपर से निकल के नहीं चली जाती. लेकिन अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो क्या होगा? जो ऊपर की लेयर है सॉइल की, वो बह जाएगी. Special roots. Now there are some special roots also. पहले तुमने tap root और fibrous root पढ़ा. Now the special roots. Have you seen a banyan tree? एक banyan tree देखा है आपने कभी? It looks like this.
It has roots which grow downwards from the branches to the soil. ये देखिए, ब्रांच से लेके नीचे सॉइल तक इसकी रूट्स जाएंगी. ओके, सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स. अब इन रूट्स को क्या बोलते हैं? जो banyan tree की रूट्स है इन्हें कहते हैं एरियल रूट्स. Plants of the pumpkin family produce huge water storing roots. ये जो pumpkin होता है ना, कद्दू देखा है आपने? जो pumpkin family के जितने भी होते हैं plants, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? Huge water storing roots. इनके जो roots होते हैं इनमें बहुत पानी होता है, वो स्टोर करते हैं वाटर अपने roots. Plants like strawberry and cherry produce buds along their roots that grow near the surface of the ground and help the plant to produce more of its. Strawberry और cherry के जो plants होते हैं ये जमीन पे ही इनके जो roots होते हैं ये grow करते हैं बिल्कुल near surface of the ground. ओके, सरफेस ऑफ द ग्राउंड पे ही ये इनके रूट्स होते हैं, वहीं से बड प्रोड्यूस करते हैं, कली प्रोड्यूस होती है जहां की फिर से एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट हो जाता है या चेरी का प्लांट उग आता है. सच रूट्स आर कॉल्ड प्रोपेगेटिव रूट्स. इनको क्या कहते हैं? प्रोपेगेटिव रूट्स. एक पढ़ा हमने एरियल रूट्स और दूसरा है प्रोपेगेटिव रूट्स. Plants like carrot, radish, beetroot and turnip store water for the plant in their roots. अब देखिए, जो अपने रूट्स में प्लांट के लिए वाटर स्टोर करके रखता है वो कौन कौन से हैं? कैरेट, रैडिश, बीटरूट, टर्निप, ये जो कि अपने रूट्स में पानी स्टोर करके रखते हैं. Such roots are called storage roots. अब देखिए, एक टाइप का और रूट हमने पढ़ लिया, स्टोरेज roots. Fine. पहले हमने क्या पढ़ा? Aerial roots. फिर propagative roots. Now the storage roots. We eat these roots as vegetables. और इनको हम carrot, radish, beetroot, turnip, इनको हम as vegetables खाते हैं. We eat these roots as vegetables. They serve us a useful source of food during famines. Famine जब बाढ़ आने की स्थिति होती है, बाढ़ की स्थिति में ये जो रूट्स हैं, कौन कौन से? कैरेट, टर्निप, बीटरूट, शुगर बीट, ये वाले ये जो वेजिटेबल्स जिनको हम एज वेजिटेबल्स खाते हैं, ये फैमिन के कंडीशन में बहुत काम में आते हैं. We need plants and trees. Yes children, हमारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें इन प्लांट्स और ट्रीज की. Why? We depend on plants and trees for most of our needs. ज़्यादातर needs हमारी plants and trees से ही पूरी होती हैं. Trees give us fresh air, food, shelter, fuel, medicines and many other things. ये हमें क्या देते हैं? ये हमें ये सब चीजें देते हैं. Fresh air. सबसे पहले तो fresh air मिलती है हमें trees से. If the trees are not there, the air, we will not get any fresh air. We'll get the polluted air. और हमें फूड भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी शेल्टर मिलता है इससे. फ्यूल, वी गेट फ्यूल, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं. वी मस्ट प्रोटेक्ट देम. यस, हमें इन ट्रीज की सुरक्षा करनी चाहिए. हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए रादर कि उखाड़ के फेंकें. प्लांट्स वी ग्रो. हम कौन से प्लांट्स उगाते हैं? Plants are the gift of nature to all living beings. People grow plants in and around their homes. There are domestic plants. These are domestic plants. जो plants हम घर के अपने घरों में, घर के आसपास लगाते हैं, वो कहलाते हैं domestic plants. The tulsi plant is an example of a domestic plant. सबके घरों में तुलसी उगाई जाती होती है और तुलसी एक domestic plant. We can see neem trees around or near our houses. Yes, neem trees भी होती है. Neem trees purify the air. Its leaves and barks are used to make medicines. और ये जो नीम ट्री होते हैं हमारे घर के आसपास, ये एयर को सबसे ज्यादा साफ रखते हैं.
और इसके bark से, bark जो होता है, जो stem होता है इसका, उसकी जो छाल जिसे बोलते हैं, okay, the bark of that tree is used, और उसके जो पत्ते हैं नीम के, वो मेडिसिन बनाने के काम में। Some housemakers grow mint, coriander and curry plants in their kitchen garden. बहुतों के किचन गार्डन में मिंट, क्या बोलते हैं मिंट को? पुदीना। यस, पुदीना, धनिया, हरा धनिया, और करी प्लांट्स। करी प्लांट्स इज द करी पत्ता जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे किचन गार्डन में मिलता है। We can also plant mango, guava, jamun and papaya plants. ये सब भी हम लगा सकते हैं अपने घरों में। People have gardens in their homes, look after the plants themselves or take the help of the gardener. लोग अपने घरों में ये सब चीजें लगाते हैं, गार्डन होते हैं उनके, या तो वो खुद देखभाल करते हैं या कोई गार्डनर लगा देते हैं उसकी देखभाल। But we also see trees like neem, jamun and eucalyptus planted on roadsides. लेकिन ये ट्रीज में रोड साइड पे भी दिखते हैं, जामुन का पेड़ भी दिखता है, नीम भी दिखता है, यूकलिप्टस भी दिखता है। These trees are public property. ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो रोड साइड पे ट्रीज लगे होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। They do not belong to any one person. We must take care of these plants. We must not allow plants to be cut. Instead, we should plant more trees. हमें इन ट्रीज की देखभाल करनी चाहिए और इनको कटने से बचाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाना भी चाहिए। Trees planted by the government. Now, what government does to plant the trees? In cities and towns, the municipal bodies plant saplings and look after them. Cities और towns में जो municipal bodies होती हैं, वो saplings लगाते भी हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं जब वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं। They also maintain gardens and parks which have trees and other flowering plants. और ये municipal bodies जो है, ये gardens और parks भी, वहाँ पे भी trees लगाते हैं और उनकी maintenance, और flowering plants भी लगाते हैं, उनकी maintenance भी करते हैं। In villages, the panchayat looks after the plants. और जो villages में trees लगाए जाते हैं, वहाँ की देखभाल कौन करता है? पंचायत। When you travel out of the city by road, you can see trees on both sides of the roads. These trees have been planted to give shade and check soil erosion. और जब हम बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं कहीं भी, तो हमें रोड के दोनों तरफ बड़े-बड़े ट्रीज दिखते हैं। तो ये जो ट्रीज हैं, ये कौन लगाता है? They are maintained by the government. Government plants these saplings, जो बड़े होकर ट्रीज बन जाते हैं, और ये ट्रीज लगाए जाते हैं लोगों को शेड प्रोवाइड करने के लिए, एंड टू चेक द सॉइल इरोजन, जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो, उससे बचाने के लिए भी ट्रीज लगाए जाते हैं। इसकी देखभाल कौन करता है? They are maintained by the government. Okay, children? Now trees in forests. अब फॉरेस्ट में भी बहुत सारे ट्रीज होते हैं। Trees which grow in the forest are looked after by the forest department. उन ट्रीज की देखभाल जो फॉरेस्ट में उगते हैं, उनकी देखभाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है। The trees are protected from people who try to cut them down to sell the wood. और उन लोगों से इन ट्रीज को बचाया जाता है जो कि लकड़ियां बेचने के लालच में इन ट्रीज को कट करते हैं। The law does not allow cutting of trees. By law, cutting of trees is not allowed. People living in forests are called tribals or आदिवासीज। Yes, आजकल अभी भी हमारे जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, उन्हें ट्राइब्स हैं, अलग अलग तरह के ट्राइब्स हैं। ये क्या कहते हैं? ट्राइबल्स या आदिवासीज। They look after the forest, और वो इस फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। They know the forest well and do not harm them. और ये जो आदिवासी ट्राइब्स के लोग होते हैं, ये लोग उस फॉरेस्ट को बहुत अच्छी से पहचानते हैं और उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। They eat the edible parts of the plants found in the forest and use some plants to make medicines. और जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो मिलते हैं, ये आदिवासी लोग क्या करते हैं? कुछ तो वो खाने के काम में लेते हैं,
जो खाया जाता है उस प्लांट में से जो चीज एडिबल होती है वो खाने के काम में लेते हैं, बाकी का मेडिसिन बनाते हैं। Some plants grow by themselves. Yes, कुछ plants जो है वो अपने आप ही ग्रो करते हैं, उनको लगाया नहीं है। They are called wild plants. उनको क्या बोलते हैं? Wild plants, जो अपने आप उगते हैं। Berries grow wild. Yes, छोटी-छोटी berries लगती है ना, वो अपने आप grow होती है। Some wild plants are useful as we use their flowers, seeds, leaves and barks. कुछ wild plants के हम flowers use करते हैं, उसकी leaves use करते हैं, उसका bark use करते हैं और seeds भी use करते हैं। Some wild plants are unwanted. और कुछ wild plants ऐसे होते हैं जिनका कोई use नहीं होता, वो unwanted होते हैं। They affect the growth of useful plants. Yes, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अच्छे प्लांट्स की भी ग्रोथ को रोकते हैं। Such plants are known as weeds. Yes. जो प्लांट्स दूसरे हेल्दी प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं उनको कहा जाता है वीड। The weeds should be pulled out regularly. ऐसे जो प्लांट्स हैं इनको डेली उखाड़ के फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। Now children, this was about the plants which grow around us. हमारे आसपास जितने तरह के plants and trees हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो you gain some knowledge. अच्छा, पता लगा ना आपको? कितनी सारी चीजें पता लगी, कितने तरह के रूट्स हैं वो पता लगे, और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो अपने आप उगते हैं, जो यूजफुल होते हैं, जो नहीं यूजफुल होते हैं। So we read all about this in the chapter here. So now some exercise time. Test yourself. Name various parts of a plant. एक plant के अलग अलग parts कौन कौन से हैं? So we start with the root. The root, the stem, leaves, fruit, bud, flowers. There are many parts of the plant. These are some of the parts of the plants. State some of the uses of plants. Plants की क्या uses हैं? Plants, they are used as food also. They are used as medicines also, and there are many other uses of a plant. Who looks after the plants in village? In a village, the panchayats, they look after the plants. Take the correct option. Which of these has a tap root? अभी हमने tap root के बारे में पढ़ा, single root जिसका होता है, that is a tap root. तो कौन से किस में हमें tap root मिलता है? Neem, peepal, carrot, all of these. Only carrot has a tap root, so take carrot. Which of the following roots can be eaten? अब कौन कौन से roots हम खा सकते हैं? Turnip, radish, carrot, all of these. ये सभी हम खा सकते हैं। Turnip, shaljam, radish is मूली and carrot is गाजर. ये सब चीजें खाते हैं. So we take all of these. Okay children, now the next one. Dash absorb water and minerals from the soil. Soil से water और minerals क्या कौन absorb करता है? Flowers, roots, leaves, stem. Roots absorb the water and the minerals from the soil. Let's move ahead. Define the following. Now we have to define some of the things given here. Root system. What is the root system? The roots which grow under the soil. Part which is under the soil, that is the root which grows under the soil, is the root system of a plant. And the next one is shoot system. The part of the plant which grows above the soil is the shoot system. The stem, the leaves, the flowers, the bud, these are all the shoot system. Okay children, now propagative roots. What are propagative roots? हमने अभी पढ़ा था कुछ special roots होते हैं जैसे aerial roots, propagative roots. The strawberry and cherry, their roots, they grow just near the ground of the surface, near the ground surface, and from that they produce a bud from which the another
plant of itself grows out. If it's a cherry plant, one more cherry plant grows out from there. That is known as the propagative root and the storage roots. Plants like radish, turnip, carrot, they all are the storage roots. They store the water in them for the plants. Now, root hairs. The hair-like structure in the roots, they help in taking the mineral and water from the soil and sending it to the other parts of the plant. Now children, write T for true and F for false. Plants grow in the soil. Yes, this is true. They grow in the soil. The flowers, stem, leaves and fruits form the root system. अब ध्यान से सोचिए, क्या रूट सिस्टम में ये सब चीजें हैं? रूट सिस्टम तो वो है जो कि सॉइल के नीचे है और सॉइल के नीचे तो रूट्स होते हैं केवल. So this is false. Roots of a plant absorb water and nutrients from the soil. Yes, this is true. Plants need water to grow and to make food through the process of photosynthesis. Yes, एक process होता है photosynthesis का, through which they need water to grow and to make food. This is true. Okay. So this one is extra, children. Fine. Now, write two examples of each of the following. हमने अभी पढ़ा है tap roots के बारे में, fibrous roots के बारे में, different kinds of roots. So, let's see how much we remember. कितना हमें याद है? Plants that have tap roots. Tap roots कौन से होते हैं? कौन से plants के होते हैं? A very simple one. Radish, turnip or carrot. Just write down carrot. They are the tap roots, radish and carrot, single root. Plants that have fibrous roots. Fibrous roots कौन-कौन से plants में होते हैं? Wheat, rice, wheat plant, rice plant. They have fibrous roots. Roots eaten as vegetables. कौन-कौन से बहुत सारे roots हैं जिन्हें हम as vegetables खाते हैं. So they are turnip and sweet root. Okay. Then roots eaten during a famine. जब famine के time पे कौन से roots ऐसे हैं जिनको खाया जा सकता है? So again, beetroot is there. Beetroot. Then carrot. And two medicinal plants. Medicinal plants are neem and tulsi. These are medicinal plants. Now, answer the following questions. What are the functions of a root? Root की क्या functions होते हैं? Root absorb the water and the minerals from the soil and send them to the other parts of the plant. Name the two types of roots. Describe each one of them. So, any two types of roots, tap root and fibrous roots. Okay. So, what are tap roots? Tap root is the root which has only one root in it, one thick root which goes down deep down the soil, and the fibrous root is the root which from the stem only it has many branches in it. So this is the fibrous root. It has many branches in it. What is soil erosion? How can it be checked? When there is heavy rainfall or when the heavy winds blow, the upper layer of the soil, it washes away. But
It can be checked by planting more and more trees. If more and more trees are there, then the roots of those trees, they hold tightly the soil and prevent them from soil erosion. Who looks after the forest? The forest department. The forest department looks after the forest. Who are tribals or Adivasis? The people who live in the forest are known as the tribals or Adivasis. What is the difference between wild and domestic plants? The plants which we grow in our house, in or around our house, are the domestic plants, and the plants which grow themselves or which are being planted by either the municipal bodies or the government, they are the wild plants. They grow themselves in the forest. The wild plants they grow themselves in the forest, and the domestic plants have been planted by the human beings in and around their homes. Fine. So children, now some activity time, and here the first activity is, why do we say that trees bring rain? How can you prove it? आपको पता है? Have you ever heard that the trees bring rain? Okay, if not, I am going to tell you how. The trees, when they have some extra water in them, they release that water in form of the water vapor from the small holes in the leaves. And this water vapor, when goes in the environment, there they form more rain clouds and they come back to the earth in the form of rain. So we say that trees bring rain. जितनी ज़्यादा trees होंगी जहाँ पे वहाँ उतना ज़्यादा rainfall. Collect pictures of the different types of roots and write about them. Now children, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जब भी आप बाहर जाते हैं घूमने, और या आपके ही किचन गार्डन अगर है तो वहाँ पे देखिए, निकाल के एक प्लांट को, उसके कैसा रूट है, इज इट अ फाइबरस वन और अ टैप रूट. तो अगर कैरेट लगा है आपके घर में, उसको निकाल के देखिएगा कैसा रूट होता है उसका. It has a tap root. So just do this activity. It's a very interesting thing and write about it. Green City, Golden City is a popular slogan. Slogans ऐसे लिखे जाते हैं ना. Think of other such slogans and make them to spread awareness about the environment among the people, amongst the people. So लोगों में awareness फैलाने के लिए कि आपको क्या-क्या करना चाहिए. We write slogans, different types of slogans. Think about some slogans, good slogans. Go green, then plant trees, save earth. These are some types of slogans. आप अच्छे से कुछ slogans, कुछ अच्छे slogans सोचिए और लिखिएगा. Fine? So here we end with this chapter, children. I hope you enjoyed this chapter with me and stay excited for the clamp of another video. I'll be back with something interesting, something very good for you. Till then, stay blessed, stay happy, keep learning. Bye.